Hello everyone, this is Hitesh Jetwani. Today I am going to teach you the concept of bailment, the part of business law. It will help you for your studies, for your exams as well. Let us begin. Definition of bailment under the section 148 defines a bailment is a delivery of goods by one person to another for some purpose. So सबसे पहले हम समझते हैं bailment होता क्या है. So bailment जब कोई person अपने जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है मूवेबल गुड्स जो है वो किसी और को हैंड ओवर करता है for a specific purpose in a specific time period, that is called bailment upon the contract that they shall, when the purpose is accomplished or accomplished, be written or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. So यहाँ पे movable जो goods है वो hand over होता है from one person to another and there should be a purpose. जैसे ही वो purpose जो है वो accomplish हो जाएगा, those movable goods will be रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब जो भी रियल ओनर है वो जिस हिसाब से गाइड करता है उस हिसाब से हम उस चीज को उस गुड्स के साथ ट्रीट किया जाएगा. बेलमेंट मींस क्रिएटिंग अ स्पेशल रिलेशनशिप बाय विच अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज हैंडेड ओवर टू अनदर पर्सन. बेलमेंट वो कंसेप्ट है जहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा दो लोगों के बीच में. एक मूवेबल गुड्स जो है वो एक पर्सन टू इट विल बी हैंडेड ओवर टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस और द टाइम. लेट अस हैव एन एग्जांपल. फॉर एन एग्जाम्पल, availing locker services from the bank. अगर आप बैंक में जाते हो so you are availing the facilities, the services from the bank. Now वहाँ पे अगर लॉकर रखते हो, so what here the concept, bailment concept is you are keeping your jewelries or the documents in the locker. So यहाँ पे bailment concept होगा जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा या टाइम पीरियड पूरा होगा, we will take the goods like which are jewelries or documents, will take the back contracts for the lease of the car. अगर आप अपनी कार जो है वो रेंट पे देते हो, सो अगेन जैसे ही वो पर्पस जो है, जैसे कि इफ यू टेक द कार ऑन रेंट, जैसे ही हम वो पर्पस पूरा कर देते हैं तो वी गिव दैट गुड्स, वी गिव दोज गुड्स टू गुड्स बैक टू द रियल ओनर. थर्ड, फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट. फोर्थ, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. सो जैसे कि थर्ड फूड का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वी आर टेकिंग हेल्प फॉर हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक देयर आर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज. हम वहाँ पे उन लोगों के साथ क्या करते हैं कि हम गुड्स जो है वो उनको दे देते हैं एंड दे आर डिलीवरिंग द गुड्स. ना यहाँ पे जो पर्पस था दैट वाज डिलीवरी, तो जब तक गुड्स उनके पास है दे नीड टू डिलीवर. और ये बिलमेंट कंसेप्ट आता है जैसे ही वो मतलब जैसे हमने डेफिनेशन में देखा दैट वुड बी रिटर्न बैक और डिस्पोज्ड ऑफ, तो यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ का कंसेप्ट आएगा. गिविंग क्लोथ टू टेलर टू स्टिच. अगर आप अपना जो कपड़ा है वो टेलर को देते हो, ठीक है, फॉर द स्टिचिंग. नाउ यहाँ पे स्टिचिंग जो है दैट इज अ पर्पस. जैसे ही वो स्टिच हो जाएगा दैट टेलर वुड रिटर्न बैक द गुड्स टू यू. जो टेलर है वो आपको आपका जो गुड्स है वो रिटर्न कर देगा. द लास्ट वन, गिविंग व्हीकल टू द सर्विस सेंटर. नाउ हम अपने व्हीकल जो है वो सर्विस सेंटर में देते हैं. नाउ here the relationship arises कि we are giving our property, own property, movable properties to the another one for the specific purpose. यहाँ पे specific purpose जो है जैसे कि सर्विस सेंटर सर्विस करवाना गाड़ी को, या तो टेलर से कपड़ा सिलवाना या गुड्स को डिलीवर करवाना. दीज आर दी स्पेसिफिक पर्पसेस. या पर्पस या जो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब हमें गुड्स को रिटर्न कर देना पड़ता है. आई कैन गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल एज वेल कि अगर हमारा फ्रेंड जो है वो हमसे कोई लाइक दैट पर्सन इज आस्किंग बुक्स या लैपटॉप या फोन जब हमसे मांगता है एंड इफ आस्किंग that कि we need book for till the exam, जैसे उसकी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी that person has to return back. That is also again concept of bailment. Now, as per the explanation given under section 148, in this type of contract, one gives possession to one gives possession of his goods to another person. ये पहला essential element हो गया. Characteristics भी बोल सकता है कि यहाँ पे goods हैं वो deliver होते हैं, एक one person to another person जाते हैं. सेकेंड, सच गुड्स आर गिवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया कि हम हमारे व्हीकल को सर्विस करने, या तो कपड़ा जो है वो स्टिच करने, या तो फिर हम हमारी ज्वेलरी की सिक्योरिटी के लिए हम लॉकर फैसिलिटीज ले रहे हैं, या हम हमारी कार को जो है वो रेंट पे ले रहे हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस. सो दीज आर दी specific purposes. Third, when the purpose is over as per the contract, it has to be returned back. जब ये purpose पूरा हो जाएगा वो जो goods हैं that would be returned back to the real owner. Fourth, the other party acts on goods as per the advice of the owner. So जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू द बैंक
फॉर द लॉकअप फैसिलिटी एज बैंक जो है वो हमें कुछ एडवाइजेस करेगा एंड वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट, हमें उसके हिसाब से काम करना है। एंड अगेन द पर्सन हु हैज द ज्वेलरी, जो कस्टमर है, दैट पर्सन वुड आल्सो एडवाइस टू द बैंक कि भाई हम इसको किस तरीके से रखेंगे। जैसे कि अगेन एग्जांपल लेते हैं, अगर हम हमारा व्हीकल जो है वो सर्विस सेंटर में देते हैं, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, वी नीड टू एडवाइस देम हाउ टू वर्क ऑन इट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। The fifth one, the person delivering the goods is called the bailor. जो person जो goods दे रहा है, the person who is the real owner, that person is called bailor, and the person who is receiving the goods, the person to whom they are delivered, they are called bailee. जैसे कि example लेते हैं, अगर being a customer we are going to the bank, मैं अपनी ज्वेलरीज वहां पे रख रहा हूँ, तो I will become a bailor and bank would become the bailee. So here there is a relationship. Okay, let's take another example, the types of bailment. The first one is deposit. Now, what is deposit? There are the different types of bailment. The first one is deposit, hire, pawn, commoditum, carriage and repair, and formation as well. Now, let us begin. Let us understand the concept of deposit. This is a simple type of bailment when a person deliver the goods to another person for safety purposes. It is called the deposit type of bailment. Let us have an example. The first one, delivery of garment to watchman before going to the swimming pool. If the person is going to the swimming pool and that person is giving his or her garments to the watchman for the security purpose, so that is called deposit as well. Second, delivering a motor car before going to cinema and theaters. So we are we are delivering our goods for the security purpose, like the person who is taking care of parking. So that is a type of deposit. Second, like we can have more example of deposit as well. So if we are renting a car, we are giving a deposit amount to the person who is the real owner, so that is again for the safety purpose. Second, hire. So hire means to take anything on a rent. For an example, when goods are delivered on rent for specific use, it is called hire type of bailment. Illustration, motor car, bicycle, typewriters, furniture are available on the rent. So hire is another word of rent. So we are taking anything like any vehicle or any furniture on rent, that is called hire. No, that is pawn. When goods are delivered to another person by way of securities or borrowing money, it is called pawn. This type of bailment, when the bailer returns the borrowed amount, bailee return the goods. Illustration: he pawns in furniture to be borrowing 20,000. इसका हम example लेते हैं. For an example, I need 20,000 rupees and I'm going to someone, like I'm going to the bank and asking 20,000 rupees, and they are asking for the collateral. So they need something as a mortgage. So in that case, that person is giving furniture or gold to the bank. So यहाँ पे ये जो पूरा bailment concept होगा, that will be considered as a bond, क्योंकि जब वो 20,000 rupees जो है, when I would be returning this 20,000 rupees to the bank would give the furniture or jewelry whichever I give as a collateral, that would be returned back. Now, commoditum, when the goods are lent to a friend for the use without taking any consideration, it is called commoditum type of bailment. Illustration: without taking any charge, giving a book for reading or supplying tools for traveling. So, for an example, if you are giving anything to your friend and without any consideration means without taking any fee or without taking any charges, so that is called commoditum. The fifth one, carriage and repair. That is again simple like a word. When goods are delivered to be carried or to repair for reward payable to the bailee, it is called carriage or repair type of bailment. For an example, goods are delivered to transport company to repair at the वडोदरा. Now again, अगर आप cloth जो है, if you are giving cloth to the tailor, like that is for the repair purpose as well, तो ये यहाँ पे माना जाएगा कि ये इस टाइप का बेलमेंट है. कैरेज एज वेल, जब हम गुड्स जो है किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को फॉर डिलीवरी पर्पस देते हैं, दैट इज. द सिक्स वन इज फॉर्मेशन. व्हेन अ पर्सन गिव्स हिज और हर गुड्स for the formation of article to another person, then it is called formation type of bailment. Now formation क्या होता है? Suppose as per the example we can take the same example. अगर हम हमारा जो goods है, ठीक है, raw gold जो है, we are giving to goldsmith for making jewelry ornaments, for making ornaments, ठीक है. So that is called formation, because जब goods हमने the person real owner जब उसने goods deliver किए, that was in a different shape, और जब वो वापस आएंगे that would be in a different shape, ठीक है. जैसे क्लोथ जो है हम टेलर को देते हैं, सो वी गिव अ रॉ क्लोथ और उसमें से वी गेट द प्रॉपर प्रिपेयर्ड रेडीमेड गारमेंट्स. सो दीज आर द फॉर्मेशंस. नाउ
Let us talk about characteristics. The characteristics are of the bailment are based upon the contract. जो bailment होगा वो contract based होगा. And second, temporary delivery of the goods. That is very simple. Under the bailment, the goods are delivered for the temporary purpose only, for the temporary period. Actual or consecutive delivery. Now let us understand what is actual and consecutive delivery. Actual delivery होता है जब हम goods किसी और को दे देते हैं, जैसे कि we give if I give my laptop to another person, that is called actual delivery. Consecutive delivery ये होगा कि suppose if I am giving the keys of my vehicle, मैं अपनी vehicle का जो key है I am giving to the my friend, that would be also considered as a consecutive delivery. ठीक है. द फोर्थ वन, स्पेसिफिक पर्पस. जब वो स्पेसिफिक पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा तब द गुड्स विल बी रिटर्न बैक. यहाँ पे फिफ्थ, द मूवेबल गुड्स. द बेलमेंट कंसेप्ट ओनली अराइजेस विद द मूवेबल गुड्स. जो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल गुड्स है, वहाँ पे बेलमेंट का कंसेप्ट नहीं आएगा. रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जैसे ही वो जो पर्पस होगा दैट इज अकम्प्लिश, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब ये गुड्स जो है रिटर्न कर दिए जाएंगे टू द रियल ओनर. एंड द सेवेंथ इज time limit. So here I hope you understand the concept of bailment के types, the essential elements as well, and these characteristics. Let me know if you have any doubt. I would be more than happy to help you. Just like, share, comment. Stay safe. Have a great day. Bye bye.